हेलो। यस सर। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने वात पित्त कफ के जो त्रिदोष है वो सब कंप्लीट किए, उसके बाद षट क्रियाकाल देखा था। अभी आज से हम देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये जो डायग्राम दिख रहे हैं उसमें दिख रहा है गैस्ट्रियम। गैस्ट्रियम बोले तो स्टमक, और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के फिर से दो पार्ट होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एक लार्ज इंटेस्टाइन। इसको हम जीआई सिस्टम ऐसा बोलते हैं। एक्चुअली जीआई सिस्टम का स्टार्ट होता है मोस्टली, जो हम कंसिडरेशन किए तो जीआई सिस्टम स्टार्ट होती है ओरल कैविटी से, माउथ से, और एंड होती है एनल कैनाल से। तो इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल इसको बोलते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम इसको बोलते हैं हम, जीआई ट्रैक इसको ही बोलते हैं हम। तो इसमें माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट, रेक्टम एंड एनल कैनाल ये पार्ट इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके साथ साथ लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज ये एसेसरी ऑर्गन करके काम करते हैं। एसेसरी बोले तो डायरेक्ट पार्ट नहीं लेते हो, लेकिन वो क्या करते हैं उसमें मतलब वो सपोर्ट करते हैं डाइजेशन के लिए। उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये सब जो कंटेंट है इसका। इसके अनुसार देखें तो आप माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये सब पार्ट जो है वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या किया जाता है, तो पहले डाइजेशन अगर आप डिफाइन किए तो डाइजेशन बोले तो एक प्रोसेस है। इसमें सिंपल जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो फॉर्म में उसको क्या करना, कन्वर्ट करना। दैट इज नथिंग बट डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल गेट कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर वन। ये लिखो डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। Digestion is the process in which complex food material get converted into simpler one. In other sense, conversion of non-absorbable food material, conversion of non-absorbable food, ठीक है लिहून घ्या मग घेतो मी त्यांना. Non-absorbable food material to absorbable one. म्हणजे डायजेस्टिव्ह सिस्टमचं काम काय आहे, तर डायजेस्टिव्ह सिस्टम म्हणजे काय, आपण डायजेशन करणार. डायजेशन म्हणजे काय करणार, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल गेट कन्वर्ट इनटू द सिंपलर वन एंड फर्दर इट इज मेटाबोलाइज्ड। उसका क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो एक्चुअली इसमें नॉर्मली हमारा जो डाइट होता है यंग अडल्ट का 1 kg तक सॉलिड मटेरियल डाइट में, 1 to 2 लीटर ऑफ फ्लूइड पर डे क्या करते हैं हम मोस्टली उसमें एनगल्प कर सकते हैं। तो डाइजेशन बोले तो इसमें क्या होता है, तो पहले इंजेक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ फूड सब्सटेंस, इंजेक्शन हो जाता है, बोले तो इंजेस्ट किया जाता है, सॉलो किया जाता है। ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। ट्रांसपोर्ट स्मॉल पार्टिकल्स टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। उसके बाद सिक्रेशन ऑफ नेसेसरी एंजाइम्स एंड सब्सटेंस। उसके बाद फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो है, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसका एब्सॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। इतना सब फंक्शंस क्या होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट हो जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट लिखो इंट्रोडक्शन। Digestive system starts from mouth and ends at anal canal. Thus, it includes first oral cavity, second oropharynx, esophagus, stomach
एक के नीचे एक लिखते जाओ। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, ऐसे 4 पार्ट है। असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्मोइड कोलॉन। नेक्स्ट रेक्टम, लास्ट वन एनल कैनल। सर, हाँ, waiting like. नेक्स्ट उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखो इंजेक्शन ऑफ फूड, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। Secretion of enzymes and substances, secretion of digestive enzyme and substances. Next, digestion of food particles. Next, absorption of digested product. And removal of unwanted substances. Removal of unwanted substances. हर एक पार्ट का फंक्शन देखने के पहले हम एक डाइजेशन कैसे होता है उसका एक स्मॉल प्रेजेंटेशन देखेंगे। स्टूडेंट कम कैसे है? with
With Byju's app, children remember their concepts forever. डियर पेरेंट्स, स्ट्रगल है, हमारा हर रोज का स्ट्रगल है जो The human digestive system is very complex and has evolved over millions of years. It basically consists of the rectum, the large intestine, the small intestine, the pancreas, the stomach, also called gaster and ventriculus, and the liver with the gallbladder. The esophagus is also part of this system, as well as various salivary glands near the mouth. First, the food is broken up in the mouth by the teeth and then mixed with saliva with the help of the salivary glands. Saliva contains a digestive enzyme called amylase that already begins to digest carbohydrates in the mouth. It splits carbohydrates into smaller units. The ball-like mixture of food with saliva, also known as bolus, is pushed into the throat by the tongue, and finally into the esophagus, which propels the bolus to the stomach. The esophageal lumen, that is, the opening inside the esophagus, is very flexible, which allows boluses of different sizes to be transported. The esophagus consists of several layers. These layers occur throughout the entire digestive tract. The two outer muscle layers are responsible for peristalsis. Through these two muscles, the bolus can be transported from the mouth to the stomach, even if the person is standing on his head. See the food bolus, it is going to propagate it by the process of peristalsis. The stomach is often divided into 6 areas. The stomach is composed of a similar structure to the esophagus. It has a longitudinal muscle layer on the outside. Underneath, we can find circular muscle fibers. In addition to this, there is an
बोल देना। ओके गूगल, गोल्डफिश का साइंटिफिक नाम क्या है? कैरेसियस ऑरेटस। That is, the opening inside the esophagus is very flexible, divided into 6 areas. The stomach is composed of a similar structure to the esophagus. It has a longitudinal muscle layer on the outside. Underneath, we can find circular muscle fibers. In addition to this, there is an oblique muscle layer overlaying the mucosa. On the inside, there are rugae that allow the stomach to enlarge when food is consumed. The stomach wall contains gastric glands. They produce mucus, which is able to protect the stomach It is also wall called from as the a mucus secreted secreting gastric glands, acid. which are able to Gastric acid is mostly produced by produce simply acid. smelling or seeing food, but also spices, and the stretching of the stomach causes the secretion, that is, the release of gastric acid. About 1 to 2 liters of gastric juice are produced per Whatever day. we are seeing in this Since the video, we esophagus are does going not to see have a details in protective our mucus physiology, layer like but the as an introduction, we should know stomach this and understanding. esophagus are separated by a sphincter. It relaxes when a bolus is pushed from the esophagus into the stomach and then contracts to prevent acid and food from going back up. Gastric juice consists, among other things, of hydrochloric acid, the enzyme pepsin, the intrinsic factor, and lipase for the digestion of fat. In addition to nutrients, food also contains bacteria that can damage the body. The components of hydrochloric acid are able to destroy harmful bacteria. In addition, hydrochloric acid converts pepsinogen, also released by the gastric glands, into pepsin. Pepsin is able to break down proteins in the stomach. For a vitamin B12 absorption in the small intestine, the intrinsic factor is needed, which is produced by the gastric glands. The vitamin must combine with intrinsic factor, then it can be absorbed later by the small intestine. Vitamin B12 helps keep the body's nerve and blood cells healthy and helps make DNA. It also contains gastric lipase, an acid-resistant enzyme for fat digestion. In the stomach, gastric lipase splits a triglyceride into a free fatty acid and a diglyceride, whereby only the free fatty acid can be absorbed by the body. More effective fat digestion takes place in the small intestine. Through gastric juice and stomach movements, which take place approximately every 20 seconds, the individual boluses are mixed to a semi-fluid mass of partly digested food, the so-called chyme. The chyme cannot enter the duodenum at first because there is a sphincter at the stomach exit. The pyloric sphincter resembles the esophageal sphincter. The pyloric sphincter opens only a few millimeters, so that larger pieces remain inside the stomach. In the first section of the small intestine, the duodenum, bile, and pancreatic secretions are mixed with the chyme via the ampulla of Vater. As the second part Pancreatic of the juice connected with the contains numerous CBD, common bile digestive duct and pancreatic proenzymes duct. and enzymes. In order for these to do their job, a higher pH value than that in the stomach is necessary. For this reason, pancreatic juice contains sodium hydrogen carbonate.
Hydrogen carbonate is able to neutralize the acid in the chyme and thus produce the optimum pH value of 7 or 8. Pancreatic juice also contains proenzymes. It is only through enterokinase, released by the duodenum wall, that the proenzyme trypsinogen becomes trypsin, which can split proteins and activate other trypsinogens. We also find alpha amylase, which we had already found in the mouth. It now does the rest regarding the splitting of carbohydrates, which it converts into maltose and isomaltose. Furthermore, pancreatic lipase is able to split triglycerides into 2 free fatty acids. The gastric lipase, as we have seen before, can produce only 1 free fatty acid. The pancreatic lipase can cleave triglycerides excellently because the bile breaks the fats down into tiny droplets. This is called emulsification. Numerous other enzymes are part of pancreatic juice, but these will not be explained in detail here. Bile is produced by the liver cells and transported to the gallbladder. The bile is stored in the gallbladder and finally added to the food in the duodenum via the ampulla of Vater. The pancreas also releases juice via the ampulla of Vater. The small intestine consists of 3 sections: duodenum, jejunum, and ileum. The ileum continues into the large intestine in the right lower abdomen. The duodenum and the jejunum have circular folds to increase the contact surface with the food. These circular folds extend about 1 centimeter into the lumen of the small intestine. These folds are covered with small finger-like projections called villi. Villi increase the surface considerably. Villi are about 1 millimeter long. Who says you don't need a reason to shop? I want the good stuff that makes jaws drop. Don't you want? These are intestinal villi are there. Each villus contains blood capillaries and a lymphatic capillary called lacteal, which we will see later. The nutrients, marked green here, are absorbed by the villus and transferred to the blood capillaries. Here it is absorption of the nutrients takes place. Some nutrients, such as glucose, do not require a carrier. They are transported freely in the bloodstream. Other nutrients, such as iron, require transport proteins like transferrin. Fats are transported by chylomicrons, which are lipoproteins. The triglycerides to be transported are virtually enclosed in the lipoprotein. Chylomicrons and triglycerides are then transported through the lacteal of the villus. Each villus is covered by even smaller microvilli. They multiply the intestinal surface considerably. The microvilli absorb nutrients and transport them to the inside.
The last part of the small intestine is the ileum. It does not have, unlike the duodenum and jejunum, circular folds. Hello? 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 Yes, sir. Actually, are you seen that video? Yes, sir. It was audible? साउंड आ रहा था क्या उसका? Yes, sir. वीडियो का साउंड आ रहा था? Yes, sir. एक्चुअली वो जो वीडियो है उसमें हमने एक जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या होता है, लाइपेज क्या होता है, पैनक्रेटिक अमाइलेज क्या होता है, उसका पेप्सिनोजन कैसे पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, एक शॉर्ट में एक हमने इंट्रोडक्शन देखा. यही हमें क्या है डिटेल में पढ़ना है. पेप्सिनोजन पेप्सिन के में कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो रिएक्शन क्या होती है, वो ऐसे डाइजेशन कैसे हो जाता है. एक्चुअली इसके लिए आपको क्या पता रहना चाहिए, स्टमक का लेंथ कितना है, कितने लोगों ने पढ़ा है, स्टमक का लेंथ कितना रहता है, इसोफेगस का लेंथ कितना रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है, लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है. एनाटॉमी में हुआ है क्या, जीआई सिस्टम? No, sir. नहीं ना. तो ठीक है, हम क्या करेंगे, एनाटॉमी का शॉर्ट और फिजियोलॉजी ऐसे साइड बाय साइड लेते जाएंगे. इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको? No, sir. Okay. Happy Doctors Day to all of you, future doctors. We will discontinue here, and in next lecture we will continue with our next topic. Okay. Thank you, sir.